Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 17th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video, students, we are talking about Samudra Shakti exercise. Then we will be talking about periodic labor force survey. Next thing we are talking about is an MOU that has been signed for 300 megawatt solar projects across India and another MOU with Israel's CIELO for initial solutions. All these things and many more will be discussed in this video, students. So stay tuned with us till the end. Also, students, I want to see maximum likes on this particular video, and also I want to see maximum homework questions answers, right? I'll be giving homework question at the end of this video. I need to see maximum of the students commenting below the homework questions. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. We are talking about Samudra Shakti exercise. This is a India and Indonesia exercise, or we can say it was Indian Navy and Indonesian Navy that took part in this particular exercise, that is Samudra Shakti. This is the 5th edition of this exercise. Next thing is asked about the location where this exercise was held. This exercise was held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This exercise is scheduled from 14th to 17th of October and it is conducted in 2 phases, that is your harbor phase and sea phase. So name of the exercise is Samudra Shakti. Next thing can be asked is that from India side, who took part? From Indian side, it is INS Kavarati that took part in this particular exercise, and from Indonesia, it is KRI John Lee that took part in this particular exercise. Right? Take a note of this. You need to remember. Next, moving on, students. Next is periodic labor force survey. Monthly bulletin has been released for the September month, and in this report has been first of all released by NSO, that is your National Statistics Office, right? It comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Here the unemployment rate has risen marginally to 5.2%. If we see for the August month, the unemployment rate was 5.1%, and for the October month we are seeing that the unemployment rate has increased to 5.2%. Important, take a note of this. Also, students, as AI is in the picture now, we will be seeing that because of AI, right, things will get automated, and when automation kicks in multiple sectors, there will be job losses in multiple sectors, and IT sector is considered one such sector where you will be seeing many losses, and as of now also we are seeing a lot of job losses in the IT sector, right? Silent layoffs are taking place and many companies are also giving the report that they have laid off, right? Moving on. Next is DRDO. They have recently signed a memorandum of understanding with SCCI, that is Solar Energy Corporation of India, for 300 megawatt solar projects across India. I repeat, DRDO under Ministry of Defense has signed this MOU with SCCI, Solar Energy Corporation of India, under the Ministry of New and Renewable Energy, to develop 300 megawatt capacity of solar based renewable energy project across DRDO establishments in India. What this will do is this will promote the renewable energy. This will promote green energy. What this will do is this will reduce the dependence on the fossil fuels for energy. This will reduce the pollution in our environment and hence also clean the environment. Also, students, if we are talking about cleaning the environment, recently we know that Diwali is coming, right? Because of Diwali, now the Supreme Court has also uplifted the ban on the crackers. So crackers are now legal. So we will be seeing that the pollution will be rising, right? So because of this, now what Delhi is saying that we will be focusing on cloud seeding. Right after Diwali, a cloud seeding will be done, that is artificial rainfall will be done, that will reduce the pollution in the environment, right? So another interesting thing that you need to remember. Coming back, DRDO, they signed this MOU with SCCI for 300 megawatt solar projects across India. Right, students? Next is Paras Defense. They have signed an MOU with Israel's CIELO for inertial solutions, right? What is this CIELO? It is your Israel-based CLO Inertial Solutions Limited, and this is for the sale, production and inertial sensors, right? Take a note of this.
And here you need to remember this is an MOU that has been signed, and this will these two organizations, they will jointly develop, market and produce these INS, this is inertial sensors here, right? Take a note of this also. Correct. And what is this INS? Inertial navigation system. Apart from this, it is Google, students. We have discussed this yesterday also. Google, they have partnered with Adani and Airtel. For what? They will be setting up an AI center of excellence, and where this will be in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Google is also planning 1 gigawatt of AI center. This is the center that we are talking about, and it is the Asia's largest data center that will be set up here, and this data center will be using green energy, or we can say clean energy. Next is AR Rahman has collaborated with Google Cloud to develop AI powered music avatars. See, AR Rahman, the very famous musician from India, right? They have partnered with Google Cloud, and they have partnered this for setting up a AI powered music avatars, right? A total of 6 digital avatars will be established, including Kara, Zentem and Blessing. This will merge AI, music and storytelling to redefine the digital entertainment and creative expression. So here, if you remember, a nano model was also launched by Google. What this will be doing is, we know that AI is a game changer now, right, in creative industry. So with the help of AI, you will be seeing that the music industry will be revolutionized, and a new theme, or we can say a new era, is coming because of AI now in the entertainment sector. Moving on, next is Dr. Ambedkar Foundation has signed an MOU to set up Dr. Ambedkar chairs in 3 universities. Where are these universities? Mumbai, Maharashtra, Jaipur National University of Jaipur, and GP Pant University of Technology and Agriculture in Uttarakhand. And here this will be establishing 3 new Dr. Ambedkar chairs in their universities. How many total chairs are there? 28 total chairs are there. This will foster research and academic engagement on Ambedkar thought, right? These chairs will facilitate research, policy discussions, educational programs on the legacy and ideas of Dr. B.R. Ambedkar, especially focusing on social justice, equality and empowerment of the marginalized communities. Next is international affairs, students. We are talking about Henley Passport Index for 2025, and our country, if we talk about it, we have slipped to 85th position in the Henley Passport Index. Which is the country that secured the first position? It is Singapore that has secured the first position in the Henley Passport Index, right? Take a note of this. If we talk about India, we have visa free entry to 57 countries, and recently is with on this location, or the rank, that is 85th, we are sharing it with Mauritius. Right, if we talk about Singapore, Singapore has visa free access to 193 countries, that is visa free, right? And Japan was on the 3rd position. Take a note of this also. Correct. Also here you can see South Korea and Japan, they jointly hold the 2nd place, but Japan is demoted to 3rd position with visa free score of just 1 less, right? That means in Japan the visa free country is 189, whereas in South Korea, if we see, the visa free entries of 190, right? So just remember first in India, that first is of Singapore with 193 visa free access, whereas India stands at 85th position with 57 visa free access. Correct. What was the last rank of India? Last year India stood at 87th position. If we talk about United States of America, it is on 12th position. Next is IUCN, International Union for Conservation of Nature World Conservation Congress was held where? It was held in Abu Dhabi, right? So direct question will be asked. This IUCN, International Union for Conservation of Nature, right? This is the organization that releases the red list, right? So recently this IUCN World Conservation Congress was held where? It was held in Abu Dhabi. It was held from 9th to 15th of October, right? And there is a theme, students, that I want you all to remember. Powering transformative conservation is the theme here, right? During this only, IUCN has adopted various strategic vision and announces the leadership here. Here if you can see, the important that I need you to remember is Her Excellency Razan Khalifa Al Mubarak will continue as IUCN president for 2nd term, right? Then who was the host country, or who this is? We saw that it was Abu Dhabi, UAE. Next time the Republic of Panama, Republic of
Panama has been selected as the host for the next IUCN World Protected and Conservative Area Congress scheduled in September 2027. Right? Then recently, the fourth edition of the World Heritage Outlook report was also released that stated that the climate change possesses a threat to almost 43% of the natural World Heritage sites globally. So, fourth edition of the World Heritage Outlook report was released. Then next question can be asked that in IUCN, which is the new member for IUCN, it is your Armenia that has been elected as the state member of the IUCN, right? Latest member. So take a note of this. Next is 78th edition of the WHO Regional Committee for Southeast Asia was held where? It was held in Colombo, Sri Lanka. I repeat, the 78th edition of the World Health Organization Regional Committee, that is RC78, was held where? For Southeast Asia, it was held in Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka. This event, it brought together the health leaders, health experts across the in this Colombo, Sri Lanka from across various countries such as from areas such as Southeast Asian region, right? And here if we see from India, Union Minister of State Anupriya Patel led the Indian delegation. Correct. And during this ministerial roundtable, the member nations here unanimously adopted Colombo Declaration. Right. So here Colombo Declaration was implemented. Right. It was accepted here. What is the Colombo Declaration? It is for healthy aging through strengthened primary healthcare. And the focus here will be on helping and making sure about the health and well-being of the aging population that is expected to double by 2050. Correct. So this is your 78th World Health Organization Regional Committee for Southeast Asia held in Colombo, Sri Lanka. Right. Here you can see who is the chairperson here. Nalinda Jatisa, the Health Minister of Sri Lanka. And who represented India here? India was represented by Anupriya Patel, the Minister of State for Health and Ministry of Health and Family Welfare. Correct, students? Moving on. See, one more thing that I want you to focus on is about resolution of the AMR. AMR is your antimicrobial resistance. What is this antimicrobial resistance? When for a particular microbe, for a particular bacteria or virus, when we keep giving same medicine of the same effect, then over a long period of time, that particular bacteria will be having a resistance against that particular medicine. So we need to keep on updating these vaccines. We need to keep on updating and doing research and development for the same. Right. So for same, it is estimated that 4.71 million antimicrobial resistant associated deaths globally have been there because those medicines were not effective on those individuals. So it should be taken care. Moving on, students. Next is India and Panama. They have established a 20-member Inter-Parliamentary Friendship Group. I repeat, it is India and Panama. They have recently established a 20-member Inter-Parliamentary Friendship Group. So how many members it is? It is of 20 members. This will strengthen the relationship between India and Panama. The cooperation will be taking place and various bilateral ties will also be enhanced. Next is banking and finance. India's GIFT City climbs 3rd place to 43rd in the 38th GFCI ranking. And here it is New York that has secured the top position. What is this GFCI? GFCI is your Global Financial Centers Index. So in this 38th edition of the Global Financial Centers Index, it is GIFT City that is in Gandhinagar, Gujarat. It secured 43rd position globally. Right. And if we talk about the country or the one that secured the first position, it is of New York. Right. New York City continue to hold the top position with a rating of 766, whereas London secured the second position and Hong Kong of China secured the third position here. Right, students, take a note of this. And this is the 38th edition of this Global Financial Center Index. Moving on. Next is Universal Sompo. They have partnered with APGB, that is your Andhra Pradesh Gramin Bank, to expand the insurance services across Andhra Pradesh. This will expand insurance services across 26 districts of Andhra Pradesh, and it will be in line with the Insurance for All, that is by 2047, the target of India to provide insurance and have a deeper penetration of insurance even in the rural areas. Correct. So this will be enhancing the insurance penetration specifically in Andhra Pradesh.
Next is appointments and resignation, students. Military leader Michael Randhiran has sworn in as the transitional president of Madagascar, as you can see him in the picture here. Next is science and technology. DRDO's indigenous military combat parachute system tested at 32,000 feet. Right. So DRDO, they have successfully conducted this combat free fall jump. As you can see, this is a parachute that will help the soldiers if they want to jump out from a high altitude, say from military aircrafts, right? And this was tested from 32,000 feet. The test was conducted by 2 test jumpers of the Indian Air Force, right? And they tested this particular military combat parachute. Moving on, next is ISRO. They have planned crewed moon mission by 2040, maiden human space flight launch by 2027. Right? So it is ISRO, and who is the chairman of ISRO? V Narayan. Right? He has announced the space agency has set the target to launch the crewed moon mission by 2040, and their maiden human space flight mission, that is Gaganyaan, on the track for 2027. Right? So next Gaganyaan mission will be in 2027. These announcements, they were made during the 35th convocation ceremony of Birla Institute of Technology in Ranchi, Jharkhand. Right? Take a note of this, important. One more thing, remember students, India is focusing on the Venus orbiter mission, and this mission will be aiming to study various facets of the Venus planet, right? That is Venus orbiter mission, WO mission. It is also being planned. Next is important days. Global Hand Washing Day observed on 15th of October, and this day is observed basically to raise awareness about the importance of washing hands with soap and water. And this time it was the 18th edition of the Global Hand Washing Day. What is the theme here? Be a hand washing hero. This is the theme here for this Global Hand Washing Day. Next is World Students Day, observed on 15th of October, students, and this day is observed basically on the, or we can say this day is observed to mark the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, and he was also known by the name Missile Man of India. Right, this is to honor the students and the transformative role of education in society. Right, you students, you are the future of India. Right, you working hard, you studying will shape our nation. Right, to honor you guys, this day is generally observed. It is observed on the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, also known as the Missile Man of India. This year it was the 94th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. There is a theme here, students, empowering students as agents of innovation and change. If we talk about Dr. APJ Abdul Kalam, in 1981 he was honored with Padma Bhushan, and he was honored with Padma Vibhushan in 1919. Then in 1997 he was honored with Bharat Ratna also, that is India's highest civilian award for science and engineering. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. CNSA, that is China National Space Administration, they have launched Tianwen-2 spacecraft, that is a robotic probe from Shenzhen Satellite Launch Center in China, as a part of their mission to retrieve samples from which type of asteroid? It is from which type of asteroid? It is from Pristine asteroid. Right, this Long March 3B rocket of China carried the spacecraft which will approach this small near Earth asteroid 2016 HO3, that is 10 millions away. Right, one more thing, remember students, there has been a news recently that is circulating and that is going viral on all the social media platforms, that there is an asteroid which is considered to be a spacecraft, right, and it is the size of Manhattan. It is expected that it will be coming to the Earth in November. Right, so students, there is nothing such official news, but right, these are hoaxes that are circulating in the market. So don't get stressed about these things. This is just a gameplay. Right, it can be a gameplay, but avoid these such type of newses and do not get scared or anything else. That right, so just ignore them. But you should know the name of that asteroid, this asteroid, that this is considered being as a spacecraft. Right, so you should know that. Moving on, identify the organization that along with Dassault Aviation SA signed 4 production transfer agreements to manufacture the fuselage of Rafale fighter aircraft in India for both Indian market and global export. Which is that organization? It is Tata Advanced Systems Limited.
Next, a team of scientists from Institute for Advanced Studies School of Nature Sciences USA discovered a new trans-Neptunian orbit located beyond the Kuiper belt in the outer region of the solar system. What is the name of this trans-Neptunian object? It is 2017 OF201. Next, mention the space center with which Andhra Pradesh government through its real-time governance society signed a 5 memorandum of understanding in June aiming to strengthen the AWARE platform. AWARE is Andhra Pradesh Weather Forecasting and Early Warning Research Center platform under the RTGS. So mention that space center with Andhra Pradesh government has partnered for this RTGS. Which is it? It is Satish Dhawan Space Center. Next, identify the company that partnered with Sordon, France to deploy Sordon's high-accuracy Horus star tracker on the company's hosted payload mission set for the launch in 2026 under Launching Expeditions for Aspiring Payloads, that is LEAP initiative. So, identify that company. It is Dhruva Space Private Limited. Next, in June, Dash announced their plan to launch India's first thinking data compute satellite, an AI-powered orbiter aboard the small satellite launch vehicle of the Indian Space Research Organization by September 2025. So, which organization announced their plan? It is TM2 Space Technologies Private Limited. They have announced their plan to launch India's first thinking data compute satellite, an AI-powered orbiter using the small satellite launch vehicle of ISRO. Next, in June, Reliance Defence Limited signed a strategic cooperation agreement worth 10,000 crore rupees, that is worth $1.2 billion, with which company to produce Volcano 155mm precision guided munition systems in India. So, Reliance Defence Limited, they signed this strategic cooperation agreement worth 10,000 crore rupees here. With whom? It was with Dell Defence GmbH and Co. KG, right, with this company. Next, identify the organization which signed a contract with Geological Survey of India for the construction of 2 coastal research vessels. It is GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. Next, name the country that in June 2025 patented a technology enabling the launch of autonomous spacecraft from an orbital station, set to become the world's first drone platform integrated with robotic systems for self-maintenance. Name that organization. It is, what is the name of that organization, or name that country, right, that partnered with the technology enabling launch of autonomous spacecraft? It is Russia. Next, mention the name of the vertical takeoff and landing unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicles are generally your drones only. Correct? And they have successfully trailed by Solar Defence and Aerospace Limited in Pokhran, Rajasthan in June. Mention the name of this vertical takeoff and landing unmanned aerial vehicle. It is Rudrastra. Next, identify the organization which signed a second agreement with the Innovation for Defence Excellence under Ministry of Defence to develop advanced hyperspectral and mid-wave infrared payloads for the Indian Air Force. It is Pixel. Next, in June, where did the Astronautical Society of India in association with InSpace and ISRO successfully conducted the test trials of a model rocket launcher system with a payload? It is in Kushinagar, Uttar Pradesh. Next, mention the name of the satellite that CNSA launched using the Long March 2D carrier rocket from Jiquan Satellite Launch Center to monitor the natural disaster using advanced space technology. So, mention the name of that satellite. It is Zhengheng 1-02. Next, Goa Shipyard Limited, that is a defense PSU, launched the 5th fast patrol vessel for the Indian Coast Guard in June 25 under 473 crore rupees project. Identify the indigenously built vessel. It is Achal. Right, this is the name of that indigenously built vessel. Next is mention the name of the Indian Navy ship
that became India's first indigenously designed and built anti-submarine warfare shallow watercraft warship inducted by Indian Navy in Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the month of June 2025. It is Arnala. Next, mention the company that successfully conducted a launch and landing test of an experimental reusable rocket at its facility in Japan in June 2025. It is Honda R&D and Company Limited. Next, identify the company that secured a TOT, that is Transfer of Technology Agreement, worth 511 crore rupees from ISRO, enabling it to design, build and operate small satellite launch vehicles. So, which is it? It is Hindustan Aeronautics Limited. Next, in June, Galaxy Space Solutions Private Limited, Galaxy, that is a tech startup, announced their plan for second This is their plan for the second Earth Observation Satellite EOS, targeting a sharp resolution of 0.5 meter and a revisit time of under 3 days. Next, mention the name of the spacecraft launched by NASA that made a significant discovery far beyond Pluto, a shell of superheated plasma dubbed as the Wall of Fire. So, name that spacecraft that made this discovery of the Wall of Fire. It is Voyager, and that too Voyager 1. Next, name the company that launched India's first fully indigenous quantum 5th generation fixed wireless access service in Hyderabad, Telangana. So, name that company. It is Bharat Sanchar Nigam Limited, that is BSNL. Next, mention the company with which Ministry of Defence placed an order in June for 450 Nagastra 1-hour loitering munitions, that are your suicide drones, to boost the Indian Army's precision strike capabilities. It is Solar Defence and Aerospace Limited, and the contract is worth 158 crore rupees. Next, who is the first Indian selected as an astronaut candidate for the space mission of USA Titan Space Industries, whose orbital mission to the Orbital Port Space Station is scheduled to launch in 2029. It is Dangeti Janvi, right? She is from Andhra Pradesh, right? And she is the first Indian selected for the TSI orbital mission for the Orbital Port Space Station scheduled to be launched in 2029. Next is Axiom Space in collaboration with NASA and SpaceX. They have launched their fourth private mission, that is Axiom 4 mission to the International Space Station. Mention the name of the spacecraft propelled into the orbit by SpaceX Falcon 9 rocket lifting the crew. So the name of that spacecraft was Grace. It was a Dragon capsule. Next, mention the name of the FPV inducted by the Indian Coast Guard at the Goa Shipyard Limited, marking a boost to the India's maritime security and indigenous shipbuilding capabilities. It is Adamya. This is the name of that FPV inducted into the Indian Navy, right? It has been delivered at the Goa Shipyard Limited. They developed this. Next, students, is our homework section. First question is, name that country that have built a 15-kilometer dedicated road for driverless vehicles. Second question, tell me recently which is the latest country that have implemented the UPI and how many countries are using UPI now. Third question, recently NPCI, they have partnered with a bank from Qatar. Which is that bank, for enhancing the UPI there for tourism, for Indian tourism. Fourth question, tell me recently who has taken charge as the Controller General of Communication Accounts. Controller General of Communication Accounts. And fifth question, who was elected as the BCCI President. Who he succeeded, tell me that also. Right? And sixth question, students, tell me recently iron beam. This iron beam, this is a weapon. What is this kind of a weapon? And it is of which country? Name that country. So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे समुद्र शक्ति एक्सरसाइज की, देन हम बात करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे एक MOU की जो कि DRDO ने साइन किया विद SCCI फॉर 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, एंड एक और MOU की जो कि
इनर्शियल सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे किया गया है। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें एंड जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं सभी बच्चों से चाहता हूँ कि वो इनका आंसर नीचे कमें एंड मैक्स टू मैक्स मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए होमवर्क सेक्शन में आज। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवी के बीच में भी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। सो इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। कहाँ पर हुई? सबसे पहले तो ये चीज़ 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। 14 से लेकर 17 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज हुई। 2 फेज में हुई, सी फेज एंड हार्बर फेज में, राइट। एंड इसी के अलावा इंडिया की तरफ से INS कावरत्ती का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। एंड इंडोनेशिया से KRI जॉन ली का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और अगर देखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहीं पे गूगल अपना एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर हम बोले एक AI हब बना रहा है। किसके साथ? अडानी एंड एयरटेल के साथ मिलकर, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का मंथली बुलेटिन अभी रिलीज हुआ सितंबर के महीने में एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बढ़ गया टू 5.2%। देखो अगस्त के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 5.1% का था और अब सितंबर के महीने में ये बढ़ के कितना हो गया? 5.2% का थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखा। इवन अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, AI अब पिक्चर में है तो AI के आने से बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे। इवन अभी हम IT सेक्टर में ये देख रहे हैं, ऑलरेडी हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां साइलेंट ले ऑफ भी कर रही हैं एंड वो डाटा बता के भी ले ऑफ कर रही हैं, जो कि इंडिया की IT सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है इन द लॉन्ग रन। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे 10 लोग काम करते थे वहीं पे अब 2 लोग AI की मदद से उस काम को कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी रिलीज की गई हैं कि फ्यूचर इज ग्रिम एंड काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर DRDO इन्होंने एक MOU साइन किया SECI के साथ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया गया अक्रॉस इंडिया। आई रिपीट, ये 300 मेगावाट का सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट रहने वाला है। इससे क्या होगा? इंडिया में जो ग्रीन एनर्जी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम होता हुआ दिखेगा एंड इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, राइट। लेकिन क्लीन फ्यूल से ये सारी चीजें रिलीज नहीं होती, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कूल रखेगा एंड साफ रखेगा। इवन हम देख रहे हैं AI है तो AI से जो डाटा सेंटर्स चाहिए होंगे इसको रन करने के लिए, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कहां से फुलफिल होती हुई दिखेगी? इन्हीं ग्रीन एनर्जी से रिलीज होती हुई दिखेगी, पूरी होती हुई दिखेगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि गूगल, अडानी एंड एयरटेल ये तीनों मिलकर एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब बना रहे हैं, राइट। एंड एक प्रॉपर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है जो कि एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर है होने वाला है। कहां पर होगा ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा और ये ग्रीन एनर्जी से पावर किया जाएगा, राइट। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी से इसको पावर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, पारस डिफेंस इन्होंने एक MOU साइन किया इजराइल की CIELO के साथ, जो कि है CIELO इनर्शियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, ताकि जो इनर्शियल सेंसर्स हैं, राइट, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स हैं, उनको यहाँ पे सेल हो सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, उनकी प्रोडक्शन यहाँ पर हो सके। मूविंग ऑन, AR रहमान जो कि काफ़ी फेमस ऑस्कर एंड ग्रैमी विनिंग इंडियन म्यूजिशियन है, इन्होंने अभी गूगल क्लाउड के साथ पार्टनर किया ताकि AI पावर्ड म्यूजिक अवतार्स को यहाँ पे बनाया जा सके। 6 अवतार्स बनाने की बात की गई, क्योंकि हम देखते हैं कि AI ना इन्होंने क्रिएटिव इंडस्ट्री को ना एक तरीके से बिल्कुल हिला के रख दिया है, राइट। आप इमेजेस बोलो, इमेजेस बन जाते हैं। जैसे अभी गूगल का हमने देखा था, नैनो मॉडल आया था, इमेजेस बन जाते हैं इजीली। सोरा से आपकी वीडियोस बन जाती हैं इजीली, राइट। तो ये एक गेम चेंजर है। इवन आप म्यूजिक भी इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहीं पे अवतार्स बनाने की बात की गई, जो एक तरीके से हम बोले जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहने वाली है फ्यूचर की, उसका बिल्कुल एक तरीके से गेम चेंजर होगा। यहाँ पे अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स आएंगे, एक डिफरेंट तरीके की हमें स्टोरी टेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, डिजिटली बहुत ज़्यादा इंडिया भी एडवांस
एडवांस होता हुआ दिखेगा एआई के आने से। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे हमें लोग होते हुए दिखेंगे, बहुत सारी क्रिएटिव जॉब्स आती हुई दिखेंगी, राइट। एआई को अपना लो, एआई से रिलेटेड आप अपनी स्किल्स को अपना लो एंड कैसे हमें एआई से हम स्किल्स बेटर कर सकते हैं। अगर आप देखो, एक और कोड चल रहा है मार्केट में कि एआई जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जिसको एआई की स्किल्स आती होंगी ना, वो जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, वो आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा। सो स्किल्स आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है टू सेटअप डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स इन 3 यूनिवर्सिटीज। ये अंबेडकर चेयर्स क्या होती हैं? बेसिकली यहाँ पे अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर रिसर्च करने का काम किया जाएगा, उनको स्टडी करने का काम किया जाएगा, उनकी जो थॉट प्रोसेस था, राइट, उन्होंने जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए जो काम किया है, एम्पावरमेंट के लिए उनका काम किया, इक्वालिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए जो काम करा है, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको स्टडी करने का यहाँ पे काम किया जाएगा, उनके ऊपर रिसर्च होगी। एंड 3 चेयर यहाँ पे स्टैब्लिश की गई हैं 3 यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एंड जेबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में, जो कि उत्तराखंड में है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। अब टोटल कितनी चेयर्स हो गई हैं? टोटल 28 चेयर्स यहाँ पर हो गई हैं। इसी के अलावा स्टूडेंट्स, आप हमें अफेयर्स क्लाउड, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे जाके हमें फॉलो करो, राइट। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसी के अलावा आप मुझे विकास_RRANA यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट, ऑन इंस्टाग्राम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज किया गया, जहां पे इंडिया की रैंक रहेगी 85th एंड सिंगापुर की पोजीशन रहेगी 1st, राइट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं 2025। यहाँ पे सिंगापुर की क्या रैंक रहेगी? सिंगापुर 1st पोजीशन पे आ जाता है। इससे अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगापुर में कितनी कंट्रीज का वीजा फ्री एंट्री मिलता है, तो 193 कंट्रीज में हमें वीजा फ्री देखने को मिलता है इन सिंगापुर आउट ऑफ 227। वहीं पे इंडिया की बात करें, इंडिया स्लिप कर गया टू 85th पोजीशन। लास्ट ईयर इंडिया की 77 पोजीशन थी, इस साल हम 85th पोजीशन पे, मतलब हमारा कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है हमारे पासपोर्ट की वो कम होती हुई दिखी है। कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री? हमारी 77 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री हमें देखने को मिलती है। टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे अगर आप देखें तो यूएसए की क्या पोजीशन रहेगी? यूएसए 12th पोजीशन पे आ जाता है। यूकेज रैंक डिक्लाइंड एट 8th पोजीशन। यूएई कहां पे है? 10th पोजीशन पे। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके द्वारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, अबू धाबी में हुई थी। एंड ये आपका बेसिकली IUCN ही है जो रेड लिस्ट रिलीज करती है, जो कि फ्लोरा एंड फौना का जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका एक प्रॉपर डाटाबेस मेंटेन करती है। तो इनके द्वारा भी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई अबू धाबी UAE में, हमें ये देखने को मिली थी। 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक हुई थी। एंड यहाँ पे एक थीम याद रखेंगे, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। यहीं पे याद रखेंगे जो IUCN की जो प्रेसिडेंट है उनका ये 2nd टर्म रहेगा, उनको रिलेक्ट किया गया है। कौन है? वो है हर एक्सीलेंसी रजान खलीफा अल मुबारक। ये इस पोजीशन पे रहेंगी एक और टर्म के लिए, ठीक है। अगली जो कांग्रेस होगी ये सितंबर 2027 में होगी। कौन होस्ट कर रहा है? रिपब्लिक ऑफ पनामा। फिर इसी के अलावा 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई, जो बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 43% ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्लोबली ये थ्रेट फेस कर रही है। IUCN के नए स्टेट मेंबर कौन सी बन गई हैं? ये और क्वेश्चन है, आर्मेनिया। तो कितने सारे क्वेश्चन यहां पर हमें इस पर्टिकुलर न्यूज से देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स, इनको मार्क करके चलेंगे। फिर आ जाते हैं 78th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया की, जो कि कहां पर हुई? कोलंबो श्रीलंका में हमें देखने को मिली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया की जो रीजनल कमिटी थी, RC78 इसको बोल सकते हैं आप, राइट, ये कहां पर हुई? कोलंबो श्रीलंका में हमें देखने को मिली। यहाँ पे हेल्थ ऑफिशियल्स, राइट, कई सारे हेल्थ के जो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ लीडर्स हैं, वो यहाँ पे इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया को किन्होंने रिप्रेजेंट किया? इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया अनुप्रिया पटेल के द्वारा। एंड चेयरपर्सन कौन थे इस रीजनल कॉन्फ्रेंस की ऑफ 78th रीजनल कॉन्फ्रेंस या फिर रीजनल कमेटी WHO की? नालिंदा जयस्तिसा, राइट, ये हेल्थ मिनिस्टर है श्रीलंका के, इन्होंने यहाँ पे इसको चेयरपर्सन रहे, ठीक है। मूविंग ऑन। फिर एक और चीज, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि जब आप कोई एक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, उसको अगर हम सेम ड्रग से ट्रीट करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो रेजिस्टेंस बना लेगा एंड फिर इस ड्रग का इस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा। तो हमें कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहना चाहिए, हमें अपनी मेडिसिन को अपग्रेड करता रहना चाहिए, ताकि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये ना आ सके। एंड इसी के ऊपर फर्दर रिसर्च के ऊपर यहाँ पे काम किया गया। एंड जो ये एम था इस WHO रीजनल कमेटी का, ये क्या था कि 2050 तक हम देखेंगे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ट्वाइस हो जाएगी आज के टाइम के हिसाब से। तो उनकी वेलबींग के लिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये कमेटी थी।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया एंड पनामा, इन्होंने स्टैब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, राइट। ये तो 20 मेंबर का रहेगा। इंडिया एंड पनामा के बीच में रिलेशन को फर्दर करने के लिए, नए रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, नए ट्रेड्स को लाने के लिए ये अभी हमें देखने को मिला। इसके बाद आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। इंडियाज गिफ्ट सिटी क्लाइम्स 3 प्लेसेस टू 43rd इन द 38th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। तो ये 38th एडिशन था ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स का। एंड इस ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में अगर हम देखें किसने टॉप किया, तो न्यूयॉर्क ने टॉप किया, लंदन सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया की बात करें, इंडिया से गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है, राइट, ये 43rd पोजीशन पे आता है, राइट स्टूडेंट्स, टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने एपीजीबी जो कि है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ पार्टनर किया ताकि इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्सपेंड किया जा सके अक्रॉस आंध्र प्रदेश। एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जो टारगेट है इंडिया का कि एक बेटर एंड डीपर पेनिट्रेशन हो सके इंश्योरेंस का इवन इन द रूरल एरियाज, इसको ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया एंड यहाँ पे पार्टनरशिप की गई ताकि घर घर तक यहाँ पे इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है, राइट, अवेयरनेस है, वो यहाँ पे पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। मिलिट्री लीडर माइकल रेंड्रियनिया, इनको स्वॉन किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, डायरेक्टली इनको पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। डीआरडीओ इंडिजीनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को टेस्ट किया गया 32,000 फीट की ऊंचाई से। आप ये पैराशूट देख सकते हैं, राइट, ये इमरजेंसी पैराशूट है। फॉर एग्जांपल कोई एयरफोर्स के प्लेन से अगर आपको इमरजेंसी एग्जिट लेनी है, राइट, तो पैराशूट में काम आएगा। कहीं पे आपको डिप्लॉय करना है कुछ सोल्जर्स को किसी एनिमी एरिया में, तो आप प्लेन से उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके टाइम पे ये काम आ सकते हैं। तो काफ़ी मजबूत ये आपके डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए पैराशूट है एंड ये मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट हैं जिनको भी टेस्ट किया गया 2 इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स के द्वारा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इसरो अभी प्लान कर रहा है क्रूड मिशन टू द मून बाय 2040 एंड स्पेस फ्लाइट लॉन्च इन 2027 जो कि एक गगनयान मिशन रहने की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला है 3rd क्रूड गगनयान मिशन 2026 से 2027 तक इसको लॉन्च किया जाएगा जो कि एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट इंक्लूड करेगा जिसका नाम रहेगा व्योमित्रा, राइट। एक्सपेक्टेड है 2025 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है, 26-27 भी हो सकता है, 26 तक गगनयान मिशन रहेगा, राइट। फिर इसी के अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने की बात की गई जो कि इंडिया का स्पेस स्टेशन रहने वाला है, राइट। इसी के अलावा याद रखेंगे व्योम VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन भी यहाँ पे लॉन्च करने की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेज पे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है हैंड वॉशिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो जर्म्स आपके हैंड वॉशिंग से खत्म हो जाते हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 18वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम रहेगी बी अ हैंड वॉशिंग हीरो। 2008 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2002 से लेके 2007 तक एंड इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है स्टूडेंट्स के लिए एंड एजुकेशन सोसाइटी के लिए एंड जो बच्चे जैसे आप स्टूडेंट्स, आप हमारे देश का फ्यूचर है, राइट। आप पढ़ेंगे पढ़े लिखेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, करेक्ट। तो आपको ऑनर करने के लिए जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की 94th बर्थ एनिवर्सरी थी। इसकी एक थीम याद रखेंगे एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। यहीं पे अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, उनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में, देन पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 1990 में एंड 1997 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इनके साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द स्पेस सेंटर विद विच आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू इट्स रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी। इन्होंने साइन किए 5 ईयर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जून के महीने में जो स्ट्रेंथन करेगा अवेयर प्लेटफॉर्म को अंडर RTGS। अवेयर क्या है? आंध्र प्रदेश वेदर फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वेदर रिसर्च सेंटर प्लेटफॉर्म, राइट। तो कौन सा स्पेस सेंटर रहेगा? वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सॉर्डन फ्रांस के साथ ताकि डिप्लॉय किया जा सके सॉर्डन की हाई एक्यूरेसी हॉरर स्टार ट्रैकर को ऑन द कंपनीज होस्टेड पेलोड मिशन जो सेट है टू लॉन्च इन 2026 अंडर लीप इनिशिएटिव जो कि है लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने पार्टनर किया? वो है आपकी ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट, जो कि एक एआई पावर्ड ऑर्बिटर यूज रहेगा यूजिंग SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो बाय सितंबर 2025। तो वो है TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अनाउंस किया अपना प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट। नेक्स्ट, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, इन्होंने साइन की एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन agreement worth 10,000 crore rupees with which company to produce Vulcan Wind 55 millimeter precision guided munition systems in India। तो किसके साथ किया ये है डेल डिफेंस GmbH एंड को के साथ। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स। 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जून में पेटेंट की एक टेक्नोलॉजी एनेबलिंग द लॉन्च ऑफ एन ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम एन ऑर्बिटल स्टेशन दैट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा विद रोबोटिक सिस्टम्स फॉर सेल्फ मेंटेनेंस। तो नेम दैट कंट्री का नाम क्या रहेगा, वो है रशिया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको सक्सेसफुली जिन्होंने ट्रायल किया बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इन पोखरान राजस्थान जून के महीने में। सो मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नाम क्या रहेगा उसका, वो है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक साइन किया एक सेकेंड एग्रीमेंट विद IDEX अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ताकि एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल एंड मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो वो है पिक्सल। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून के महीने में, वेयर डिड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इनस्पेस एंड इसरो, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा टेस्ट और ट्रायल्स ऑफ अ मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद अ पेलोड। तो कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया, तो ये टेस्ट किया गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो CNSA ने लॉन्च की यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ताकि नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर किया जा सके यूजिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो सैटेलाइट का नाम पूछा है, वो है Zhenghe 102। फिर आ जाते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल को फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर 473 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल, तो वो क्या नाम रहेगा उसका, वो है अचल। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जो कि बन गया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप जो कि इंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जून के महीने में, जून 2025 में। सो मेंशन द नेम ऑफ दैट इंडियन नेवल शिप, वो है अर्नाला। नेक्स्ट, मेंशन द नेम या फिर उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट एट इट्स टेस्ट फैसिलिटी इन जापान। तो मेंशन द कंपनी, वो है आपकी होंडा R&D कंपनी लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वर्थ 511 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इसरो जो एनेबल करेगा इट टू डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सी वो कंपनी रहेगी, वो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून में गैलेक्साई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्साई जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, इन्होंने अपना अनाउंस किया प्लान फॉर इट्स सेकेंड ये सेकेंड क्या रहेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी जो कि टारगेट करेगी एक शार्प रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 मीटर एंड रिविजिट टाइम ऑफ अंडर 3 days। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया नासा के द्वारा दैट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी फार बियॉन्ड प्लूटो। वहाँ पे उन्होंने वॉल ऑफ फायर जो कि एक सुपर हीटेड प्लाज्मा है उसको डिस्कवर किया है। तो ये वॉयजर 1 के द्वारा किया गया, 2 वॉयजर थे, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। वॉयजर 1 अब सबसे वो एक लौता या फिर हम बोलेंगे ये पहला ह्यूमन मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि इतने बड़े डिस्टेंस पे जा चुका है फ्रॉम अर्थ, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके भी पार निकल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिन्होंने भी लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस हैदराबाद तेलंगाना में। तो उस कंपनी का नाम बताओ, किसको क्या नाम रहेगा, वो है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL ने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं
मेंशन द कंपनी जिसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर 450 नगस्त्रा 1 आर लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनके लिए, ताकि इंडियन आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। कौन सी कंपनी है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। एंड 158 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर आ जाते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ यूएसए टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज whose orbital mission to the orbital port space station is scheduled for launch in 2029। तो वो कौन है? दंगेती जानवी। एंड ये पहली इंडियन बनी, ये आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, एक्सियोम स्पेस, इन्होंने कोलैबोरेट किया नासा के साथ एंड स्पेस एक्स के साथ, ताकि अपना 4th प्राइवेट मिशन को लॉन्च किया जा सके, एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट प्रोपेल्ड इनटू ऑर्बिट बाय स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट लिफ्टिंग ऑफ द क्रू। तो वो है ग्रेस। ग्रेस नाम रहेगा, वो एक ड्रैगन कैप्सूल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि इंडक्ट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मार्किंग अ बूस्ट टू द इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। तो क्या नाम रहेगा उस फास्ट पेट्रोल वेसल का? अदम्या उसका नाम रहेगा। एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट। एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का पहला जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बन गया, जो कि 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस से, मतलब इस जेट्स की मदद से प्रोपेल होके वो हवा में उड़ा। राइट, एक तरीके से आप आयरन मैन की तरह कह सकते हैं इसको, राइट, जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ये अभी बनाया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट एंड ये काफ़ी गेम चेंजर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका नाम रहेगा आयरॉन कब 3। Next, students, is our homework section. First question is, name that country that have built a 15-kilometer dedicated road for driverless vehicles. Second question, tell me recently which is the latest country that have implemented the UPI and how many countries are using UPI now. Third question, recently NPCI, they have partnered with a bank from Qatar. Which is that bank for enhancing the UPI there for tourism, for Indian tourism. Fourth question, tell me recently who has taken charge as the Controller General of Communication Accounts. Controller General of Communication Accounts. And fifth question, who was elected as the BCCI President? Who he succeeded, tell me that also. Right? And sixth question, students, tell me recently iron beam. This iron beam, this is a weapon. What is this kind of a weapon and it is of which country? Name that country. So these are your 6 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.